So greetings to everyone. Today we will discuss in continuation with our last lectures where we talked about different theories of evolution. We talked about mutation theory, Darwinism and Lamarckism. Today we will talk about the theory which is known as Hardy-Weinberg principle, and it's a part of population genetics. Apart from that, we will look into the different states that must have occurred in plant and animal kingdom for production of whatever plants we see nowadays. Okay, so let's have a look into the PPT. So with the affirmation from you that you don't have any doubt, I am moving ahead towards a final theory, that is Hardy-Weinberg principle. So there is a part of genetics. We all studied genetics this time. There is a part of genetics which is called population genetics. Okay, so Hardy-Weinberg principle is about population genetics, and this is talking about frequency of alleles in a population. During our lectures, one thing is clear to you: the key factor in evolution is the variation. Do you all agree with me that variation plays a very important role in evolution? Class, what do you think? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. Lamarckism, be it Darwinism, be it mutation theory of the breeds, everywhere one thing is common, that there must be a what I can say, variation evidently found in population. So, Hardy-Weinberg principle is basically focusing on this concept and trying to find that how allelic frequencies or genes frequencies are operational in case of mutation. Okay, so we will get back here to Hardy-Weinberg principle. This principle states that under certain condition of stability, the frequency of alleles in a population are stable and it remains constant from generation to generation. Okay, so this is called, this stability is called genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium. Now this is the in words. Let us understand. If we will look into the equation, it will be easy for us to understand. Consider P is one allele and Q is one allele. So P square is representing, I will give you one example here. We discussed about Mendelian genetics. वहाँ पे आपने देखा है कि if we are considering the character, that is height, we will have two forms. These are called tall and dwarf. Okay. Now tall is represented by capital T and dwarf is represented by small t. Okay. So here these capital T or small t are two different genes which are part of allele. Now if the frequency, what is the frequency? Frequency means out of 1,000 organisms, how many of these organisms are having capital T, capital? So P square is representing frequency of capital T. Q square is representing frequency of small t, and these 2PQ is representing frequency of capital T,
small t. So they are saying that all these frequency, the sum total will be 1 in a stable population. Okay. Now, if this figure, this 1 is changing, then it can be said that there is evolution in the population. So, जब तक ये 1 की value 1 ही रहेगा, it may be a number of organisms with capital T will decrease. अगर capital T decrease हो रहा है, then capital T and small t will increase. Understood? There may be change in the individual allelic frequencies, but उनकी sum total हमेशा क्या रहेगा? 1. और अगर 1 change हो रहा है, that means there will be a evolution in the population. Is this part clear? Class? Yes, ma'am. So yes, ma'am. and Weinberg ने idea ये दिया कि what are the factors that actually affect the equilibrium. So जब तक equilibrium है, मतलब population में evolution नहीं हो रहा है, तब तक इसकी value क्या होगी? It will be 1. जैसे ही evolution हो रहा है and this value is changing, this value is changing, मतलब ये जो factors है, that is gene migration, second genetic drift, third mutation, fourth recombination, and fifth natural selection. So the beauty of Hardy-Weinberg principle is कि उन्होंने देखो हर एक की concept को summarize करके they kind of proposed it together. Okay, so these are the 5 factors which can be the change in the equilibrium, that is 1. So let us have a look here. We already talked about a few factors. Mutation के बारे में हम बात कर चुके हैं. We know what genetic drift is. Recombination means crossing over. We discussed it in detail. And natural selection is also discussed. Any doubts in any of these parts, beta? Class, the one which I striped out already. Last lecture we discussed about what is genetic drift, what is bottleneck effect, founder effect. We discussed all these parts, isn't it? Ma'am, that elephant one. Yes, beta. Ma'am, genetic drift means that elephant stepped on. Yes. Okay, ma'am. Sudden change, which is not at all selection, which is there is no direction and selection for all of them. So now we will look into the other things, that is what is gene migration. See, it was very easy for Darwin to predict about Darwin's finches because it was a population which was confined in an island. When I am talking about island population and its evolution, it is quite evidently not affected by the migration of gene. जब कोई organism island में रहता है बेटा, there are less scope of outsider to come in and insider to go out. है ना? समझो एक समंदर के बीचों बीच एक island है which is too much secluded from the mainland. वहां पे बाहर से किसी स्पीशीज का आना और वहां से किसी स्पीशीज का mainland में जाना is quite difficult. Do you agree with me? Yes, ma'am. So this gene migration concept was not much applicable in case of island population. But if you are talking about evolution, you are not only considering the island population, no?
You have to talk about evolution as a whole. उसके लिए ये जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पॉपुलेशन में आउटसाइडर्स आते हैं तो वेरिएशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिजम्स छोड़ के जाते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो दैट जीन विल बी लॉस्ट। ओके, सो we know that there may be emigration and immigration, and in both cases genes are lost or genes are added in a population. So these gene migration can be a key role player in the evolution. Next is genetic drift, which we discussed once again. I discussed यहाँ random change होता है, there is no directional change. Natural selection में क्या होता है बेटा, there is a directional change, means अगर हाइट बेटर है तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनकी हाइट बेटर है they will get a better chance of survival, they will predominate the population. रैंडम में कोई रीजन नहीं होता है, जैसे कि हाथी के पैर का एग्जांपल दिया गया, it was observed by chance, it was on blue beetles, so they died. Understood? जैसे बिस्टन मेटुलेरिया पेपर्ड मॉथ में the change of industrial revolution was a key role player, it was a direction. Genetic drifts are always random, there is no reason for selection of those organisms. Okay, so sudden change in allelic frequency to cause evolution, genetic drift is very important for that. Okay, next is mutation. We started our lecture of today about this because without mutation there is no variation, and without variation there is no evolution. Recombination, that is crossing over, it is always reshuffling of parental data. So obviously this is giving you a scope of new variation. And last but not least, it is most critical. Nowadays, human plays a role in artificial selection, but उससे पहले तो दुनिया में natural selection was the thing. You can imagine nature was so strong that big, large animals like dinosaurs do not exist nowadays because nature find they are not suitable for their survival. Okay, so here one new word is visible, which is called speciation. So what do we mean by this word speciation? Speciation word means it means that creation of new species. Understood? So how new species must have created? अब तक ये हमने इवोल्यूशन को लेके बहुत सारी थियरीज पढ़ी है, बट हर बार सब कुछ थियरीज पढ़ाने के बाद भी एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रह जाता है कि मैम ऐसा होता क्या है जिससे इवोल्यूशन होता है। सो अल्टीमेटली इवोल्यूशन मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स लेटर ऑन। अब natural selection process will depend on traits that is favored. अब देखो, if you look into this diagram, there are three options. One is stabilization. Stabilization मतलब stabilization in a population मतलब वो character का selection करना जिसमें maximum organisms population का आ जाए। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम कंसीडर करें सिचुएशन ऐसा हुआ है जिससे जिन लोगों की हाइट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जिसको एडवांटेज मिले, ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट व्हाट विल हैपन इज पॉपुलेशन का जो एवरेज हाइट है, समझो पॉपुलेशन का एवरेज हाइट 4.5 है,
तो उसी रेंज के ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिले, ऐसी चेंजेस होती है। एम आई मतलब लाइक यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग बेटा? स्टेबलाइजेशन लाइक जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन? नेचर ने अपना रुख चेंज किया, नेचर ने अपनी सिचुएशन चेंज की, उसके ऊपर से नेचर सिलेक्ट करेगी कि हु इज द फिटेस्ट। यस और नो? अंडरस्टूड दिस पार्ट टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Ma'am, can I explain it? Stabilization. I will. पहले ये बताओ मुझे, नेचुरल सिलेक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नेचुरल सिलेक्शन जो है, these selection can have 3 types of effect in a population. नेचुरल सिलेक्शन जब होता है उसका पॉपुलेशन पे 3 प्रकार के इफेक्ट हो सकता है। What are these effect? One effect is stabilization, मतलब समझो तुमको हाइट के बेसिस से सिलेक्ट करना था। अब अगर हाइट के बेसिस से सिलेक्ट करना था तो नेचर ने ऐसा हाइट सिलेक्ट किया, एक रेंज 4 to 6 फीट या 4 to 5 फीट हाइट के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। So when we can call this is a stabilization selection, कब हम इसको stabilization selection बोलेंगे? जब पॉपुलेशन में 100 लोग अगर है, ये 100 में से 65% लोग कंसीडर करो ये रेंज में आता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेचर को क्या करना था? नेचर जो था उसको सिलेक्शन करना था। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना था? एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट उसको करना था, दैट इज हाइट। उसने कौन सी हाइट सिलेक्ट की? उसने हाइट सिलेक्ट की 4 to 5 फीट। अगर आपके पॉपुलेशन में मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इसी रेंज पे आए तो वी विल से दैट ओके दिस नेचुरल सिलेक्शन इज अ स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। ये काफी स्टेबल सिलेक्शन था क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स उसी के क्राइटेरिया के अंदर पॉपुलेशन का आ गए। अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. अब हम कब बोलेंगे कि इट इज अ डायरेक्शनल चेंज? डायरेक्शनल चेंज मतलब कंसीडर करो एक पॉपुलेशन है जिसमें मीन वैल्यू इज, मीन एवरेज हाइट जो है, मीन जो है वो 4.5 है। ठीक है, सो ये देखो, ये जो मीडियम साइज्ड है, दिस इज, ये पॉपुलेशन में आप अगर देखेंगे कि अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला के देखूं तो यहाँ पीक दिख रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस पीक? क्या है ये? अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें एक्स एक्सिस में आई हैव हाइट और वाई एक्सिस में आई हैव नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद दैट फिनोटाइप, अगर हुआ तो मैक्सिमम की कौन से हाइट में मैक्सिमम लोग रहेंगे? कंसीडर करो, हमने यहाँ स्केल लगा दिया 3 फीट, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड 6। अंडरस्टूड? अब देखो, जब स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन हुआ है तब पॉपुलेशन में इवोल्यूशन के बाद कौन से ग्रुप का नंबर ज्यादा है बेटा? आपकी जो एवरेज हाइट है उसी का नंबर ज्यादा है। यस और नो? Yes, ma'am. पीक की हाइट बड़ी है, आपने देखा?
ये जो सरफेस था दिस वाज ब्रॉडर, इफ यू कैन लुक दिस वाज ब्रॉडर। यहाँ देखो इसकी ब्रॉडनेस कम हुई है, इफ यू मेजर दिस मच टू दिस मच, यहाँ देखो ये ब्रॉड कम हुआ है, दिस इज मोर स्टीप। डू यू ऑब्जर्व द डिफरेंस? Yes, ma'am. एंड ये वाली पिक की जितनी हाइट है आपकी, यहाँ पे ये वाली पिक की हाइट क्या है उससे ज्यादा हुआ है, मतलब y एक्सिस y की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन सा वैल्यू को प्रेफर कर रहा है, मिडिल वैल्यू को प्रेफर कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। अब मैं इसी के हेल्प से आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन। इफ यू लुक इनटू द चेंज ओवर हियर, ये केस में अगर आप चेंज देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, इवोल्यूशन के बाद जो पॉपुलेशन बना है उसमें 3 फीट हाइट के कोई ऑर्गेनिज्म है भी नहीं, 4 के भी नहीं है, 4.5 के भी नहीं है। अभी एवरेज हाइट हमारा हो गया है 5, उसके बाद 5.5 और देन 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? डू यू थिंक कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है उसने कौन सी हाइट को प्रेफर किया, ज्यादा लंबी हाइट या छोटी हाइट? छोटी हाइट। छोटी हाइट को प्रेफर किया। No, ma'am. लंबी हाइट को। मैम लेकिन छोटे हाइट के तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है नहीं ना बेटा, तभी तो आपका ग्राफ शिफ्ट कर रहा है राइट साइड में। मैम लेकिन डिस्टेंस कम है ना। आई डिडंट, कैन यू प्लीज रिपीट? मैम डिस्टेंस कम है ना। किसका डिस्टेंस बेटा? मैम ये एक्स एक्सिस में हमने हाइट प्लॉट किया है, वाई एक्सिस में हमने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लॉट किया है, किससे डिस्टेंस देख रहे हो आप? मैम जैसा कि आपने बोला था ऊपर में कि ये इसका डिस्टेंस बढ़ गया है फर्स्ट वाले से, तो मैम सेकंड डिस्टेंस वाले बढ़ से जाने का मतलब क्या है, आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है, कंसीडर करो यहाँ y है 100, यहाँ y 150 है, तो आपका नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये ग्राफ को अगर मैं प्रेजेंट करूँ ये ऐसा दिखेगा 3.5, इसमें कोई है नहीं, देखो 4 है, देन 4.5 में मैक्सिमम लोग हैं, देन 5.5 है, 6 में ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं। तो मेजोरिटी जो मिडिल हाइट के ऑर्गेनिजम्स है दे गॉट प्रेफरेंस, सारे ऑर्गेनिजम्स उसी में आ गए। स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर, वी कॉल इट अ स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द मीन कैरेक्टर। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। यहाँ मीन कैरेक्टर किसका है, कौन सा कैरेक्टर मीन कैरेक्टर है? 4.5 ना बेटा। तो सबसे बड़ी पीक आपको कहाँ मिल रही है? 4.5 है मतलब 150। तो ये अगर 100 में मिल रहा था आपको, नाउ यू आर गेटिंग इट एट 150, मतलब क्या हो रहा है, आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग एवरेज हाइट। यस This मैम। type of change or this type of natural selection is called stabilizing selection. Disruptive में क्या होता है, एक डायरेक्शन ले लेता है, वो मिडिल पाथ नहीं लेता है, वो या तो बड़े हाइट में जाएगा या फिर छोटे हाइट में जाएगा। अंडरस्टूड? इट इज हैविंग अ डायरेक्शन इन केस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। एंड डिसरप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ देखा है कैसा है पीक, हैव यू सीन? यस मैम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एवरेज हाइट को बेनिफिट मिल रहा है, इट इज हैविंग एवरेज हाइट।
यहाँ क्या हो रहा है, इट इज हैविंग यहाँ पे मोर हाइट अगर हुआ तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, और डिसरप्टिव सिलेक्शन जब होता है उसमें क्या होता है, लेस हाइट और मोर हाइट दोनों को मिलेगा। किसको बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिला है, किसमें ऑर्गेनिज्म सबसे कम है बेटा, कैन यू टेल मी इन केस ऑफ एवरेज? हम एक हाँ यस मैम एवरेज। So this is how these three types of natural selection work. It can be anything depending on nature and the constraints applied by a specific population. Population to population, situation to situation, natural condition to natural condition. Any of these three types of selection can be applicable. Understood? Class? यस मैम। These figures you Yes, ma'am. need to understand very clearly, क्योंकि इसको twist कर करके बहुत सारे questions आते हैं. So it's good you understood, so we can move ahead. So we discussed, I keep on revising because the connection should not be lost. We discussed about the 5 factors which as per Hardy-Weinberg can disturb the equilibrium. क्योंकि Hardy-Weinberg के हिसाब से value 1 का change होना मतलब there will be evolution in the population. So now we will one by one look into the history of evolution of animals. Okay, but before we go there, I wish to share something to you that is about speciation, and I want to talk about speciation in detail. So स्पेशिएशन समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन. सो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि एक स्टेबल पॉपुलेशन है जिसमें p square plus 2pq plus q square की वैल्यू इज इक्वल टू 1. ओके, अब ये पॉपुलेशन में वेरिएशन इज देयर. ऐसा कोई पॉपुलेशन बहुत मुश्किल है जिसमें वेरिएशन is not there. So variation will be there. अब क्या होता है बेटा, now any of these 5 factors will come into being. What are the 5 factors? One is let me talk about the second step, that is change in equilibrium. That means p square plus 2pq plus q square will no longer be 1. अब इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 5 फैक्टर्स होता है. जीन माइग्रेशन, मैम आपने फर्स्ट स्टेबल पॉपुलेशन में बोला कि वेरिएशन होगा, मतलब इतना ड्रास्टिक नहीं होगा, है ना? वेरिएशन होगा बट उनमें से किसी एक को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, सभी लोग हैं. अंडरस्टूड? अच्छा मैम, मतलब सब में वेरिएशन हो रहा है. they are coexisting. मैम कभी मतलब जीन सब में माइग्रेशन होगा या समझो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी या ऐसी कोई भी चीज होगी, तो तब क्या होता है, एक all these are what? All these are entropy or disturbances. आप अगर म्यूटेशन पूछो, आप अगर कंसिडर करो
recombination पूछो या natural selection पूछो, all of them are having two aims. One is creation of variation, but this variation was not that prominent कि ये इसको disrupt करे. Understood? जब हाँ, disrupt मतलब इन करेगा सब में साथ में होगा वेरिएशन, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि समझो p स्क्वायर की वैल्यू घट रही है तो 2pq और q स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेट टोटल चेंज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? यस क्या मैम। में याद रखना बेटा, हर एक चेंज के लिए हम अगर अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ बैलेंस। वो रोज पढ़ने का सोचता हूँ, रोज कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। व्हाट आई बिलीव इज धीरे धीरे कोई आदत नहीं पड़ती। आपको पहले दिन से यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अपॉन यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। यू हैव टू पुश योर लिमिट। आई एम नॉट टेलिंग कि पहले दिन से ही तुमको मतलब 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू पुश योर लिमिट एंड slowly and steadily you have to increase your limit. Same is applicable here. So after all these steps, the third step that will be origin of species, जिसे हम बोलेंगे कि स्पेसिएशन। नाउ बेटा इसके लिए दो चीजें हैं जो मुझे यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज called isolation. Okay, now the thing is that if you wish a specific variation to exist as a species, as a new species, first thing that is required is stopping it to mingle up with their other group members. Mingle up in the sense वो एक दूसरे से बैठ के बातें नहीं करेंगे लोग। There should not be reproductive mingling of the organism. Understood? क्या होगा अगर वो साथ में बैठे तो? बेटा, what will happen? मैम मुझे समझ नहीं आया आपने बोला तो। I said that there should be an isolation. Consider करो आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 वेरिएशंस है। वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, वेरिएशन 4 एंड वेरिएशन 5। अब आपके जो नेचुरल सिलेक्शन है उसने ये वेरिएशन 5 को सिलेक्ट किया है। अगर ये वेरिएशन 5 इन लोगों के साथ रिप्रोड्यूस करे तो व्हाट विल हैपन? क्लास, व्हाट विल हैपन? मैम तो कोई मतलब बचेगा ही नहीं ना। बचेगा मतलब मर जाएंगे सारे? मैम मतलब वेरिएशन और मतलब हो जाएगा। वेरिएशन और होने से अच्छा है कि वो जो एक रिमार्केबिलिटी थी इसमें, इट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, दैट्स व्हाई इट वाज चोजन बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो चीज ही नहीं रहेगी ना बेटा, बिकॉज देयर विल बी इंटरमिक्सिंग ऑफ डेटा। डू यू अग्री विथ मी? Because all Yes, these ma'am. reproduction will be sexual reproduction, और जब sexual reproduction होता है तो there will be intermixing of data. एक एग्जांपल देती हूँ चलो।
डू यू अग्री के स्मॉल एस अगर है समझो, दिस इज इक्वल टू रफ सीड। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों की जीनोटाइप ये होती है, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग स्मूथ seed coat. This character is unique. Do you agree? Because it is less frequent in the population. Class? Yes, ma'am. I guess in my class only Yesha is there. Abhi, you are understanding what I am teaching, beta? Yes, ma'am. Great. So अगर हम ये स्मॉल ए की यूनिकनेस मेंटेन करनी है, should you allow it to reproduce with capital S small s या फिर capital S? इनके साथ रिप्रोड्यूस करने से क्या वो रफ सीड कोट वाला कैरेक्टर मेंटेन कर पाएगा? No, ma'am. नहीं ना। तो आपको सबसे पहले इसको अगर सेपरेट रखना है तो उनके साथ रिप्रोडक्शन बंद करना। डू यू एग्री और नॉट? Yes, ma'am. So that is what is isolation. So speciation के लिए isolation is very much required. So isolation means मैम मतलब इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे वेरिएशंस के साथ रिप्रोडक्शन नहीं होना हाँ, बट चाहिए। एक चीज याद रखना बेटा, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो ये जो V1, V2, V3, V4, V5 है, इसका मतलब 5 ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। 10,000 ऑर्गेनिज्म में ये 5 वेरिएशन होगा। सो ऑब्वियसली V5 में सिर्फ अकेला एक V5 नहीं होगा, देयर में भी मोर देन 1 ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड ना? यस मैम। So isolation means it's not allowing intermixing of character. अब इस कंटेक्स्ट में दो चीजें होती है, we have to understand. One type of speciation is known as allopatric speciation. So what is this allopatric speciation? Allopatric speciation में क्या होता है? जियोग्राफिकल बैरियर होता है। मतलब कंसीडर करो एक बड़ा सा जंगल था, उसमें ये अपने V5, V2, V3 सभी साथ में रहते। ओके, सडनली व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन अर्थक्वेक, जिसके वजह से यहाँ बीचों बीच में से एक नदी का बहना स्टार्ट हो। तो नदी के बह जाने की वजह से या कोई भी दूसरी माइग्रेशन की वजह से या कोई भी एक रीजन की वजह से ये V2 और V5 तो एक जगह पे रहने लगे, बट V3 इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। अंडरस्टूड? तो क्या होगा, अब आप अगर इन लोगों को कई 100 साल बाद देखोगे, ऑब्वियसली इट विल नॉट अकर इन 1 year or 2 years, but if you look into them after so many years, you will see that this is my species 1 and this is my species 2. Understood? Yes or no? They are Yes, ma'am.
separated from each other due to different geographical location. ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि समझो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, डार्विन की जिराफ वाली एग्जांपल ही मैं वापस से दूँ कि जंगल में अचानक ट्रीज जो है वो बड़े ट्रीज ही रह गए, छोटे ट्रीज नहीं रहे। सो ऑब्वियसली जो छोटे और मीडियम हाइट के जिराफ थे वो लोग उस जगह से चले गए। वी कैन नॉट सर्वाइव देयर ना, वो वहां रह सकते, खाएंगे क्या? और बड़े वाले नेक वाले जिराफों ने सोचा कि भाई हम क्यों जाए, हमें तो यार खाना मिल रहा है। So they say bye bye to each other और मीडियम और शॉर्ट नेक वाले वहां से निकल गए। कई सौ साल बाद आप अगर देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो लंबे गले वाले ऑर्गेनिजम्स थे, they survived there, they changed there, and finally you have a new species over there which is giraffe. और जो छोटे और मीडियम नेक वाले हैं, they evolved into something else. They are no longer called giraffe. Understood the concept? Yes, ma'am. Now, second thing is, it's not always possible to get separated by geographical barrier. Possible थोड़ी ना है कि सब लोग छोड़ के चले जाए, या भूकंप आ जाए, या फिर नदी बह जाए, या पहाड़ उठ जाए, ऐसा possible नहीं। So second type of speciation that is there is called, yes बेटा? मैम मतलब ये जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, तो मैम उसमें मतलब कैरेक्टर्स या उसमें चेंज नहीं आएंगे, सीधा स्पीशीज ही चेंज हो जाएगी, राइट? स्पेशिएशन मतलब बेटा इट्स सी एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में कैरेक्टर, स्पेशिएशन में कभी कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेशिएशन? ओके मैम, चेंज इन producing new species. So उसका प्रोसेस है, उसके लिए चेंज, स्पेसिएशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, उसके लिए ये सारे स्टेप्स होते हैं। देखो मैंने यहाँ जितने भी स्टेप्स मेंशन किए ना, उसके ऊपर क्या है? स्पेसिएशन, दैट इज स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो कोई स्टेबल पॉपुलेशन है, उसके चेंज में, इक्विलिब्रियम में चेंज हुआ और उसकी जगह पे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ चेंज इन इक्विलिब्रियम होने से नहीं चलेगा, देयर शुड बी like an aspect that is called isolation. So हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि for isolation, why it is required isolation, ताकि intermixing of character, वरना जहां से स्टार्ट किए थे हम वहीं पे वापस से चले जाएंगे, तो उसका कोई फायदा हमें होने नहीं वाला है। We will not have any benefit of that. Understood? और दूसरा ऑप्शन क्या है? What is the second option? या फिर वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, या फिर वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। यस दिस। What will happen if the characters will mix? Dish, your voice is breaking a lot, beta. Can you repeat? And what will happen if the characters will mix together? Can anyone tell me what he is speaking? I mean, he's saying that what will happen if the characters will be mixed? Then तो there are less chances of speciation ना Dish. तुम समझो दाल और चावल अलग कर रहे हो और कोई वापस से आके मिक्स करता जा रहा है, will you be able to separate them anytime? No, ma'am. आपको अगर एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज को डेवलप करना है, सबसे पहले आपको उसको दूसरों से सेपरेट करना जरूरी है, नहीं तो वापस से इंटरमिक्सिंग कैरेक्टर होगा ना बेटा। आप समझो इवोल्यूशन जो होता है ये एक जनरेशन में नहीं होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरा जो बच्चा होगा वो अचानक से इवॉल्व होकर ह्यूमन की जगह पे कुछ दूसरा बन गया। इट्स अ थिंग व्हिच टेक्स टाइम एंड इट इज अ थिंग व्हिच विल बी कैरीड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। So obviously मैं distinct variable character हूँ, I am something very unique in the population,
बट ये यूनिकनेस मेरे बच्चे में जाना चाहिए, और मुझे जब मैरी करना है किसी को, देन आई कैन नॉट मैरी समवन whose gene will drag my uniqueness of gene into a common thing. आप समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब although they are in the same population, they cannot reproduce. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल तुम लोग मुझे दो, मैं 100 बार ये एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ, जो इंश्योर करता है कि बेटर कैरेक्टर और नॉट सो बेटर कैरेक्टर शुड नेवर मिक्स. Although they are staying together, they are never successful in production of mixing of character. Can anyone tell me which organism I wish to refer here? Yes, Jia? Yes, it is mule. देखो नेचर ने ही कैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किया है. Although horse and donkey can reproduce, but इसकी कोई फ्यूचर नहीं है. म्यूल रहने से क्या होगा? सिंगल जनरेशन से इवोल्यूशन नहीं होता है ना बेटा. अंडरस्टूड? So is this part understandable? What is speciation and what is the role of, like, what I can say? Okay, what is the roles of this one? Yes, ma'am. Isolation in speciation. Yes, ma'am. So I wish to today show you one very nice video in which this whole concept of evolution is summarized. So I wish all of you to have a look upon it, and then we will discuss further with plant animal evolution and finally human evolution. Evolution. Evolution is the development of life on Earth. This is a process that began billions of years ago and is still continuing to this day. Evolution tells us how it was possible for the enormous diversity of life to develop. It shows us how primitive protozoa could become the millions of different species that we see today. Evolution, then, is the answer to the question that we have all asked on seeing a dachshund and a Great Dane together. How is it possible for ancestors to have descendants that look so very different to them? In answering this question, we want to focus on animals, excluding other forms of life such as fungi and plants. The first question to ask is therefore, how can one animal develop into a whole new species of animal? But just a quick question. What exactly is a species? A species is a community of animals that is capable of producing offspring with one another, with those offspring also being capable of reproducing in turn. To understand this answer better, we need to take a closer look at the following points. The uniqueness of living creatures, guaranteed through the excess production of offspring and heredity. And, as a second key point, selection. Let's begin with uniqueness. Every creature that exists is unique, and this is essential for evolution. The members of a species may strongly resemble each other in appearance, however, they all have slightly different traits and characteristics. They may be a bit bigger, fatter, stronger, or bolder than their fellow animals. So what is the reason for these differences? Let's take a closer look at a creature. Every creature is made up of cells. These cells have a nucleus. The nucleus contains the chromosomes.
and the chromosomes hold the DNA. DNA consists of different genes, and it's these genes that are life's information carriers. They contain instructions and orders for the cells and determine the characteristics and traits that living creatures have. And it's precisely this DNA that is unique to every creature. It's slightly different from individual to individual, which is why each has slightly different characteristics. But how is the enormous range of DNA created? One key factor is the excess production of offspring. In nature, we can observe that creatures generally produce far more offspring than is necessary for the survival of their species, with many offspring dying an early death as a result. Often there are even more offspring than the environment in which they live is able to support. This is one factor in increasing diversity within a species. The more offspring that are produced, the more little differences occur. And this is what nature wants, as many little differences as possible. The second major cause of the uniqueness of individuals occurs in heredity itself. By the way, heredity means the passing on of DNA to offspring. Two very interesting factors come into play in this process: recombination and mutation. Recombination is the random mixing of the DNA of two creatures. When two creatures fall in love and mate, they recombine their genes twice. The first time they do this separately, when they generate the gametes, that is, sperm and egg cells. The gametes take half of the genes and shuffle them. The second recombination occurs when a male inseminates a female. The parents each provide 50% of their DNA, in other words, 50% of their unique traits and characteristics. These are then recombined or mixed, and the result is new offspring. These offspring have a random mix of the DNA and therefore the traits and characteristics of their parents. This increases the diversity and differences within a species even further. But mutations are also important for evolution. Mutations are random changes in DNA. These can also be described as copying errors within the DNA, triggered by toxins or other chemical substances or by radiation. Lamontio is all about going beyond what we women are used to when it comes to functionality and versatility. Everyday bags. These changes are often negative and may result in illnesses such as cancer. However, they may also have neutral or positive effects, such as the blue eye color in humans, which is one such random mutation. In all cases, a mutation has to affect a gamete, that is, a sperm or egg cell, because only the DNA in the gametes is passed on to the offspring. This is also the reason why we protect our sexual organs during X-rays, whilst other parts of the body are not at risk. In summary then, in the heredity process, creatures pass on their characteristics to their offspring in the form of DNA. Recombination and mutation change the DNA so that each child looks different to its siblings and receives a random mix of the characteristics of its parents. There's a key word here: random. All of these processes are based on chance. Random recombination and mutations result in individuals with random mixes of traits and characteristics, which in turn mix these randomly and pass them on. But how can so much be down to chance when all living creatures are so perfectly adapted to their environment? For example, the stick insect, the hummingbird, and the frogfish. The answer is provided by the second key point, selection. Each individual is subjected to a process of natural selection. As we have learned, each individual is somewhat different to its fellows, and there is extensive variation within a species. Environmental influences have an effect on living creatures. These so-called selection factors include predators, parasites, animals of the same species, toxins, changes in habitat,
or the climate. Selection is a process that each individual is subjected to. Every creature has a unique mix of traits and characteristics. This mix helps them to survive in their environment, or not, as the case may be. Anyone with an unsuitable mix will be selected from the environment. Those with the right mix survive and can pass on their enhanced traits and characteristics. This is why diversity is so important. This is why creatures make so much effort to produce offspring that are as different as possible. They increase the likelihood that at least one of their offspring passes nature's selection process. They maximize their chances of survival. A good example of this can be seen in a group of finches living on a remote island. They are some of the most famous animals in the world of science and are known as Darwin Finches after their discoverer, Charles Darwin. And this is the story of those finches. A few hundred years ago, a small group of finches was blown onto the Galapagos Islands in the middle of the Pacific, probably by a big storm. The finches found themselves in an environment that was completely new to them, a real finch paradise, an abundance of food and no predators. They reproduced rapidly and numerously. The islands were soon heaving with finches. This meant that food supplies became increasingly scarce. The finch paradise was threatened with famine, and finch friends became competitors. This is when selection intervened. Their individuality and small differences, in this case their slightly different beaks, meant that some of the birds were able to avoid competing with their fellow finches. The beaks of some of the finches were more suitable for digging for worms. Other finches were able to use their beaks better for cracking seeds. The finches consequently sought out ecological niches. In these niches, they were safe from excessive competition. They soon began to mate primarily with other finches that used the same niche. Over the course of many generations, these characteristics were enhanced, enabling the finches to exploit their niches successfully. The differences between the worm diggers and the seed crackers became so large that they were no longer able to mate with one another. Different species emerged as a result. Today there are 14 different species of finch living on the Galapagos Islands, all of which are descended from the same group of stranded finches. This is how new species are created by evolution, through the interaction of unique individuals, the excess production of offspring, recombination and mutation in heredity, and finally, through selection. Why is this so important? It tells us where the variety of life comes from and why living creatures are so perfectly adapted to their habitats. But it also affects us personally. Every person is the result of 3.5 billion years of evolution. And that includes you. Your ancestors fought and adapted in order to survive. This survival was an extremely uncertain thing. If we consider the fact that 99% of all the species that have ever lived are extinct, then you can consider yourself part of a success story. The dinosaurs have disappeared, but you are alive, watching this video. Because you're incredibly special, just like all the other creatures that exist today. Irreproducible and unique in the universe. Understood the link between everything, class? Yes, ma'am. So that is how it's not a very simple process which can be done in a single step. It takes years, beta. So that's all from my side today. Next lecture we will talk about
quickly that how animal kingdom evolution must have occurred, plant kingdom evolution must have occurred, and human evolution. That's all. Any doubts, anyone? So I guess we can conclude today's lecture. Bye to all of you. Bye, ma'am.